Hello students, this will be first lecture on our YouTube channel dealing with the concept of set, that is the class 11th chapter 1. You can say chapter 1, that is sets. Okay, so class 11 chapter 1 is sets. Now you should understand one thing before getting the sets. Now firstly I must write the definition of set. So what is a set? As per your NCERT definition, a set is a well-defined collection of objects. Well-defined collection of objects. और मैं आपको पहली बात बता दूं, मैथ्स में कोई भी चीज़ रटने की नहीं है. आपको each and every concept will be clear on this YouTube channel, on your YouTube channel. So now just coming upon the definition of a set. What is a set? A set is a well-defined collection of objects. Now there are two words, well-defined and collection and object, three words. Okay, so you should understand what is the definition. A set is a well-defined collection. Your collection is well-defined. Why a collection should be well-defined? Because if you do simply a collection, if you simply just do a collection, your collection can include a pen, a paper, a phone, and you just collected these three items or these three objects. Object, what is an object? Any non or living thing or non-living thing. Pen, paper, phone, these all are non-living things, can be an object. Okay, but if I do a collection, but if I pick a pen, is it पेन के अपने फीचर होंगे, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. मतलब a pen can have its own, will have its own features and its characteristics. Similarly a paper will have its own features. Similarly a phone will have its own features and characteristics. Getting the point? This should be very clear to you. Now this is simply a collection, but this collection is not well defined. Now what is a well defined collection? If you just take a collection of mobile phone of XYZ company. Okay, of XYZ company. I am saying XYZ company. कोई भी हो सकती है, Apple की हो सकती है, Samsung हो सकता है, Redmi, Realme, whatever company, whatever you like, you can take that company. Okay. Now if you took a phone from this collection, this phone will belongs to a same company only, and phone will have its own features also. So this collection is well defined. Why well defined? Because in this collection only the objects which are present is mobile phones. So if you pick any object, you will get only a mobile phone only of a same company. So such collections is well defined. तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो तो होती ही हैं. लेकिन जब हम सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करते हैं, तो ऐसा कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाते हैं. तो कलेक्शन ही है सेट, लेकिन वो कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ सेट्स. नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर दैट अ फर्स्ट पॉइंट इन दिस, अ सेट इज represented by a capital letter. A set is represented by a capital letter. It will not be represented by a small letter. It will always be represented by a capital letter. Capital A, capital B, capital C, any till Z, any one. Okay. So I am just giving you example. Let us take an A is the set of all vowels. I will just tell you why I have written like this. But this is a set of all vowels.
represented by a set, here you should only understand this thing, that a set is represented by a capital letter. This thing, this is a set. I will tell you how. Now there are two forms. There are two forms in which you can write your set. Okay, so what is the first form? The first form is roster form. First form is the roster form. Now what is this roster form? A form or a way of representing a set. A way of representing a set in which the elements of set are separated by the commas, separated by the comma, and enclosed within curly braces. Within curly braces. What are these curly braces? These are these symbols. These are these symbols. Okay, I hope you are getting this. So this is a roster form. So a way of representing a set in which the elements of a set are separated by the commas enclosed within curly braces. जो एलिमेंट्स हैं आपके इस तरीके की फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, देखिए ये मैंने रोस्टर फॉर्म ही लिखी हुई है, जिसमें कि वॉवेल्स जो हैं वो एलिमेंट्स हैं इस सेट के, और सेपरेट बाय द कॉमा एंड इनक्लोज विद इन द कर्ली ब्रेसेस. Now we can take another example. Let us give it a name, capital X. 1, 2, 3, 4 and 5. So this is a set of all natural numbers from 1 to 5. See, 1, 2, 3 and so on till 5. So each and every element of this set is separated by the commas and enclosed within the curly braces, and these all elements are enclosed in the curly braces. So this is the roster form. Now second form is the set builder form. Second form is set builder form. See, I am just telling you this thing. In set builder form, you just write the language. You just write the language which represents which through that language you gets all the elements of a set. Now I will just give you an example how this you represent a set in this way. See, here you have two things in which you represent the set by writing the complete language, and by giving a formula. By giving a formula that can encompass all the elements of a given set. I will just mention you each and everything. Now just take the example. I'm taking how you will get to write by the language. So now let us take an example of A. Just see here carefully. Do not skip in between. You will not understand the concept and you will face the problems in last. So just watch carefully. A is a set of all x such that x is a vowel. Now I will mention you which set I have given. See, this is same as A, writing as A, E, I, O, U. Now how? I will just tell you. See how you will read this. A, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे आप अपने सेट को. A is the इक्वल्स टू को यहाँ पे क्या रीड करोगे? Is the set of all. फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस को कैसे रीड करेंगे? सेट ऑफ ऑल x. x क्या है यहाँ पर? एक आर्बिट्री एलिमेंट है, एक जनरल एलिमेंट है जो कि आपके सारे एलिमेंट, सारे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा आपके सेट के. तो वो x क्या है? x इज अ वॉवेल है. अब वॉवेल कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. तो आपने सिमिलर सेट को जो कि रोस्टर फॉर्म में आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया. अब हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं. जैसे कि अब मैं एक सेट ले लेता हूँ. मैं सेट ले लेता हूँ A1. A1 में मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4 and 5. अब मैं A1 को
फॉर्मूले की फॉर्म में लिखता हूँ तो फिर से वही A1 इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू नेचुरल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसको डार्क एंड बोल्ड कर सकते हैं। एंड जो आपका n है वो कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है, n इज लेस देन इक्वल्स टू 5। हमको लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे ऑब्वियस है 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आप जब इसको लिखेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, a इज द सेट ऑफ ऑल x। A1 क्या है, सारे उन x का कलेक्शन है जो कि x क्या है, स्मॉल n है, और स्मॉल n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल को बिलोंग करता है। मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में बताऊंगा कि इसका ये अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसको हम कहेंगे बिलोंग्स टू, मतलब ये जो n है, स्मॉल n है, वो कहाँ से आएंगे, एलिमेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएंगे, मतलब सारे नेचुरल नंबर से आएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। एंड स्मॉल n इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब जो n की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 रहेगी। तो आप जानते हैं कि स्मॉल n नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई होप इन दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। What is a set? A set is a well-defined collection of objects. Your collection should be well-defined, okay? And you have understood how to represent. Every set is represented by a capital letter, and it has its two form, roster form, and second is the set builder form. Okay? So revise it, and we will meet in next lecture with the another concepts, and we will very soon be dealing with the 10 most important questions that can come in your CBSE board exam or ICSE board exam for each and every chapter from first to last chapter for class 11th as well as for class 12th. Till then, take care, Jai Hind, goodbye, and stay home, stay safe.